Hey friends, let's see today's current affair. And sorry for the delay. Senegal has become the fourth country to sign the JETP deal. JETP deal का full form है Just Energy Transition Partnership, right? इसका aim क्या है? To reduce emissions in the energy sector and accelerate the coal phase out. Launched at the COP26 in Glasgow with support of the United Kingdom, UK, the United States, US, France, Germany, and the European Union (EU). Senegal has become the fourth country after South Africa, Indonesia, and Vietnam to sign the JETP deal. Now the next headline: Euclid space telescopes to be launched. Named after the Greek mathematician Euclid of Alexandria. Mission part of ESA's Cosmic Vision program. Plan to explore the origin of the universe. Launched. It will be launched on a SpaceX Falcon 9 rocket and will remain operational for a minimum of 6 years. Spacecraft will have a 1.2 meter wide telescope and 2 instruments. Next headline है Aspartame can be declared carcinogenic by WHO. Artificial sweetener called aspartame. तो aspartame क्या है? Artificial sweet है, found in many soft drinks. Approximately 200 times sweeter than sucrose. Sucrose क्या होता है? Common sugar होता है. Discovered by, इसे किसने discover किया? जेम्स एम स्कैटर ने. केमिस्ट थे in 1965. Introduced to replace sucrose, common sugar. नेक्स्ट टॉपिक हमारा घोस्ट पार्टिकल्स न्यू पिक्चर्स ऑफ आवर गैलेक्सी. तो आवर गैलेक्सी में घोस्ट पार्टिकल्स को देखा गया है दैट हैव नॉट बीन डिटेक्टेड अंटिल नाउ. नेक्स्ट हेडलाइन वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे 2023. तो ये 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हजार्ड्स एंड crisis communication action in case of a credible asteroid threat to planet Earth. UNGA, the United Nations General Assembly, passed a resolution in December 2016 designating June 30 as International Asteroid Day. Next headline है हमारा Intergovernmental Negotiations Framework IGN. President of the 77 sessions of the United Nations General Assembly recently said the first segments of the UN IGN, it means Intergovernmental Negotiations Framework, meetings are now webcast. Dedicated websites on the Security Council's reform has been established. Now the next one, banking on World Heritage, India to host. Showcasing currency notes from G20 countries featuring UNESCO World Heritage sites. Now the next headline is Pen Pinter Prize 2023. Michael Rosen. ये माइकल रोजन क्या है? राइटर है, साथ में परफॉर्मेंस पोइट भी है. तो हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पेंटर प्राइज 2023. इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज़ गिवन टू अ राइटर हु रिफ्लेक्ट्स अ फियर्स इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेशन डिफाइन द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइव्स. इस्टेब्लिश कब हुआ था ये प्राइज, पेन पेंटर प्राइज? तो 2009 में. प्रीवियस विनर्स हैं हनीफ, सलमान, लेमन. कब से? 2010 से 2019. ये 10 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 9 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 10 से स्टार्ट हुआ डिस्ट्रीब्यूट होना. नाउ द नेक्स्ट, अमेरिकन बाल्ड ईगल रिमूव्ड फ्रॉम द इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट. इट रिमूव्ड फ्रॉम द इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट इन 2007. So thank you. Keep watching my videos.